Good morning students. Today we will study about 12.2 Fundamental Principles of Democracy. In our previous video we have already discussed about the democracy, needs of democracy and importance of democracy. Now today we will study about fundamental principles of democracy. The principles of democracy are as follows. The classical principle of democracy. According to these principles, the basis of governments is the current of the peoples. If the government does not come up to the experience of the peoples can remove the government to next election. The welfare of the people is an important aim to government. यानी कि जो पीपल्स होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, यदि वो उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते तो वो नेक्स्ट इलेक्शन में उन्हें रिमूव भी कर सकते हैं। और जो गवर्नमेंट होती है उसका मेन एम होता है कि वो पीपल्स का यानी कि जनता का कल्याण करे, पीपल वेलफेयर से उनका इम्पॉर्टेंट एम होता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज द लिबरल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज इट लाइज एम्प्लॉयज ऑन द फ्रीडम ऑफ द पीपल एंड द सोसाइटी। यानी कि ये जो रूल होता है, ये जो प्रिंसिपल होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी पर जनता का जो बेस है वो डिपेंड करता है। द अर्लीस्ट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, दिस प्रिंसिपल हैज़ बीन प्रोग्रेटेड सिंस द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। यानी कि 20th सेंचुरी में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। इट लाइज द इम्प्लॉयज ऑन द बेसिस नेचुरल इनइक्वालिटीज अमॉन्ग मेन एंड बिलीवर्स that in the all political systems there are two classes, the ruling and the ruled। इसकी दो classes होती है, ruling and ruled। Now next is pluralist principle। In these principle believes that the democracy a person has a freedom to organize himself into various groups from the fulfillment of various interests। In this way, all groups shall spare power of exchange of fulfillment of other interest। Now next is Marxist principle। In the year of 19th century, a new principle of democracy based on the ideology of modern time, Karl Marx, come up। According to this, the classical democracy or a liberal democratic system, real democracy is not possible because in the governments of controlled by a small resourceful class, whereas actually democracy is based on the welfare of all the equality among all। यानी कि जो डेमोक्रेसी होती है वो सभी के अपॉर्चुनिटीज़ या फिर सब लोगों को बेसिक इक्वलिटी देने से और सभी के कल्याण से ही सक्सेस हो सकती है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी इज क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी शुड बी एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट। यानी कि जो प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, इसके अंडर में हम देखें तो जो डेमोक्रेसी है वो ऑल क्लासेस के लिए बेनिफिशियल है, बेनिफिट रखती है। Principal powers, therefore the state itself become a group and exploits। The Marxist principle believes the political powers must be wise in the entire society, but for these it is important that the economic power should be in hands of entire society। The principle of democracy lies more employs on the economic equality rather than on political and civil equality। For the establishment of the real democracy, Marxists give following status suggestions: social ownership of means of production and distribution, equal distribution of wealth and fulfillment of everyone's basic needs, power for the representation of people with similar economic interests, of complete power to administrate the must to be in hands of one party। Marxists believe such a democracy to be the actual and the base democracy। After the First World War till 1999, the
These was flourished on the Soviet Union. Now we talk about 12.3 the types of democracy. यानी कि democracy के types क्या होते हैं? Generally the democracy is of the two types, direct democracy and indirect democracy. First is direct democracy. When a people residing in a state themselves directly discuss people issues on the basis of which policies and laws are made, then such a government is called direct democracy. Direct democracy is possible only the states where lies less population and those which are small in size. In the present time, when a big states a number of citizens occurs, direct democracy is not पॉसिबल. यानी कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती वो उन्हीं जगहों पर पॉसिबल हो सकती है जहाँ पर पॉपुलेशन कम होती है या वो एरिया उसका जो होता है वो कम होता है. बड़ी जगहों पर ये पॉसिबल नहीं हो पाती है. Direct democracy today is in the some contents of the Switzerland and under the Panchayati Raj system in the Gram Sabha in India. Now next is indirect democracy. Indirect democracy, when a people participate in the making of law and controlling the working of the administration through the election representatives is called indirect democracy. In these the people choose the representative for a particular time, fixed time, who form the legislature and make laws. यानी कि जो लोग होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को एक फिक्स पीरियड टाइम के लिए इसमें चूज कर लेते हैं जो कि लॉज बनाता है. इन दिस सिस्टम ऑफ विशेस ऑफ द पीपल्स इज प्रेजेंट थ्रू द इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव. और इस सिस्टम के अंतर्गत उस पर्टिकुलर पर्सन को जो रिप्रेजेंटेटिव है जिसे इलेक्ट किया गया है वो जनता की या जो पीपल्स है उनकी डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए काम करता है. Now we talk about next topic 12.4 features of democracy. Features of democracy. The aim of every individual is self growth. For these every individual needs some opportunities. Democracy is the only administrative system in which all get equal opportunities without any discrimination for these ऑल ओवर डेवलपमेंट. यानी कि जो डेमोक्रेसी होती है वो ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जिसमें सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के. सबका ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है. द डेमोक्रेटिक सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डिग्निटी ऑफ इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स. वो सिटीजन्स की डिग्निटी को मेंटेन कर रखता है. सिस्टम इज बेस्ड ऑन डिग्निटी एंड इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स. Freedom, justice and social welfare is important in this democracy. The fundamental features of the democracy are as follows. जो democracy के fundamental principles हैं वो कुछ इस प्रकार हैं. First is ruling system. In a democracy people rule directly their elect representative. In these the people have continuous influence other the ruling class. Next is rule based on equality. यानी कि ये जो rule है वो equality पर based है. Democracy is based on the principle of equality. In these form of government all citizens without any discrimination have equal civil and political rights. Elections within a fixed time period is essential for democracy. और जो डेमोक्रेसी होती है उसमें इक्विटी का अपना इम्पोर्टेंस होता है. डेमोक्रेसी जो होती है वो जो इक्विटी का प्रिंसिपल है उस पर बेस्ड होती है. सभी लोगों को बराबर अधिकार है, सबको समानता का अधिकार है और सभी को अधिकार है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकते हैं. All the adult citizens have to equal rights to vote, elect their candidates in their elections. और इलेक्शन में वो अपने कैंडिडेट्स को चूज भी कर सकते हैं, उन्हें पूरा राइट्स है. The present democratic influence the social and economic equality as well. और आज हम सोशल और इकोनॉमिक दोनों इक्वलिटीज को एंजॉय करते हैं.
no discrimination on the basis of religion, race, caste and gender, social status and ability of minimum economic needs and conditions to the aim democracy, यानी कि यही डेमोक्रेसी का एम होता है। Now next strength of the system of freedom, यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमें स्ट्रेंथ भी देता है। In undemocratic, various types of freedom are given in the citizens for their all over डेवलपमेंट, यानी कि डेमोक्रेसी में हमें बहुत सारे टाइप्स की फ्रीडम्स जो है वो दी हुई है। बिसाइड द पॉलिटिकल फ्रीडम्स, राइट्स टू वेरियस टाइप्स ऑफ रिलीजियस एंड कल्चर फ्रीडम्स आर ऑल्सो गिवन टू दी सिटीजन्स, यानी कि इसमें हमारे पास बहुत सारे के रिलीजियस हों चाहे वो कल्चरल हो, बहुत सारे ऐसे टाइप्स की फ्रीडम्स हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से या डेमोक्रेसी की तरफ से दी गई है। In a democracy, citizens have to right to vote, get elect, hold people of office, give speech, freedom to express themselves, the associate, organization, meetings, and address people, and perform or trade and establish any kind of industries and organization in all over the part of India. If the citizens do not agree with policies of the government, then they have to right to protest, यानी कि यदि उसको गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई कोई पॉलिसी नहीं ठीक लगती है तो वो उसके लिए प्रोटेस्ट भी कर सकता है। Freedom is the soul of democracy. Without the freedom, democracy is not possible. It is a very important sentence for you because इसमें कहा गया है कि democracy is the soul of democracy. Freedom is a soul of democracy. Freedom जो है वो democracy का soul है और इसके बिना democracy possible नहीं है। Rule of law. Rule of law in this system, the governments frame on a wishes of the peoples works according to law, therefore it also called the rule of law, यानी कि ये जो सिस्टम है इसमें गवर्नमेंट फ्रेम ऑन फ्रॉम विशेष ऑन द पीपल, यानी कि जनता की जो विशेष है उसके आधार पर काम करती है और इसीलिए इसे रूल ऑफ लॉ भी कहा गया है। बाय रूल ऑफ लॉ इज मीन द एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, यानी कि जो लॉ के सामने सभी जो है वो इक्वल है, बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। सिमिलर पनिशमेंट इज गिवन टू सिमिलर क्राइम्स, यानी कि समान सभी को पनिशमेंट मिलेगी यदि उसने वो अपराध किया है तो। whereas to be a status and position of the individual, चाहे फिर वो उसकी कोई भी पोजीशन हो, कोई भी स्टेटस हो, उसको वो पनिशमेंट मिलना ही है। It's not the rule of any individual or group, ये किसी के लिए अलग अलग नहीं है। Therefore it is important to have a constitution where a fundamental laws are included, और इसीलिए यहाँ पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल राइट्स और लॉ दिए हुए हैं, मेंशन किए गए हैं। The government makes law according to conditions and requirements. These law are above all, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो कंडीशन और जो भी रिक्वायरमेंट्स रहती है उसके आधार पर अपने लॉस फ्रेम करते हैं। इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल इलेक्शंस, यानी कि इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल इलेक्शंस की बात हम लोग करेंगे। कंडक्टिंग इलेक्शन ओनली अ नॉट ईच इन अ डेमोक्रेसी, बट इलेक्शंस मस्ट बी conducted in independent and impartial manner so that the possibility to unfair practice on the people in power is not there. There should be no pressure on voters during the election and the election procedure should be impartial, यानी कि जब इलेक्शन होता है तब कि उस जो वोटर होता है उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए जब वो वोटिंग के लिए जाता हो। ये जो राइट्स हैं वो हमारे पास इंडिया में हैं और भी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर ये एडल्ट फ्रेंचाइज या वोटिंग के राइट्स जो हैं वो पीपल्स को मिले हुए हैं। They will of the people of supreme in a democracy,
और जो डेमोक्रेसी होता है उसमें पीपल जो होता है, जो लोग होते हैं वो सुप्रीम प्लेस पर होते हैं. इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इलेक्ट्स द होल फॉर टाइम टू टाइम. और ये जो प्रोसेस होती है गवर्नमेंट की, इसमें इलेक्शन टाइम टू टाइम होता रहता है. For forming the government, various political parties and independent candidates have to freedom to participate in this election. और इस इलेक्शन में सभी को पार्टिसिपेट करने का राइट्स होता है. Most of democratic countries along with the India have a system to open election. The impartial apex and democracy is based on the freeless, fairless voting by voters from the candidate of he and her choice. वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपने कैंडिडेट को चूज कर सकता है. ये इंडिया में हमारे पास राइट्स हैं, इसीलिए इसे कहा गया है कि एक इम्पार्शियल और फेयरलेस इलेक्शन जो है वो होल्ड होना चाहिए. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ वी टॉक अबाउट द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. Fundamental principles and administrative organization in the most important feature of the democracy, so that any ruling party on the basis of its majority may not define on changes in according to the wishes of peoples and fences. यानी कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो इम्पॉर्टेंट होता है, एक इम्पॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी का. और जो रूलिंग पार्टी होती है वो मेजोरिटी पर बेस्ड होती है, इसलिए उसे जनता की सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए. डेमोक्रेसी इज ऑल्सो बेस्ड ऑन इक्वलिटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स. यानी कि जो डेमोक्रेसी है वो फ्रीडम और इक्वलिटी पर बेस्ड होती है.